is Alpha Somani. I hope you all are doing well at your homes in this time of pandemic. So today we are on chapter number 8. We will start chapter number 8, The Forbidden Walks. Okay, so we have completed the book 1, term 1, and we are starting with the second book, term 2. Okay, so today we are starting with chapter number 8, The Forbidden Walks. Okay, so this chapter is about a girl and a history and the story which belongs to history, how hope comes into our lives and how we need to solve our problems, how we need to solve the problems in our lives, and how we need to have hope, how we need to have faith in wherever there is something bad, something good will happen definitely. So we will learn about the chapter later, but let's start with the vocabulary first. Okay, so let's continue and let's start with the vocabulary part and then we will start the chapter. The first one is a package. So what is a package? Package means किसी भी चीज का एक बंडल, किसी भी चीज का साथ में कोई चीजें हो, दो तीन चीजें साथ में. For example, a package of goods, a package of pen, a package of किसी भी चीज का जो दो चार चीजें साथ में हो उसे हम पैकेज कहते हैं. कोई भी एक बंडल जो साथ में हो उसे हम पैकेज कहते हैं. For example, a package of treatment, a package of treatment in the hospital. Okay, so you get a package, right? So that is called something in a group is called a package. Next one is curious. Curious मतलब आप किसी भी चीज को लेके उत्सुक हो, आपको जिज्ञासा हो किसी चीज को लेके, when you're interested in something. Okay, for example, I'm curious about the result of the IPL. Okay, so मैं क्या रिजल्ट होएगा आईपीएल का उसको लेके आई एम क्यूरियस, मैं बहुत उत्सुक हूँ, मैं बहुत जिज्ञासा है मुझे उस चीज को लेके, दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सो दैट इज कॉल्ड एज क्यूरियोसिटी. एंड व्हेन यू आर curious about something, when you have the curiosity, you are called as curious. Okay, when you are interested in something. Next one is desperately. Okay, desperately means it's, yeah, desperately. Okay, so desperately means what? Desperately, when you want something very extremely, when you want something miserably, आपको बहुत ज्यादा कोई चीज चाहिए होती है, so you are called as desperate about something. Okay, for example, I desperately want किंग्स इलेवन पंजाब टू विन. ओके, सो जैसे कि किंग्स इलेवन पंजाब नहीं जीत रही है, वो हार रही है, सो आई डेस्परेटली वांट, मुझे बहुत ज्यादा इच्छा है, आई एक्सट्रीमली वांट, I miserably want that Kings 11 Punjab wins. When something is not happening and you want that to happen extremely, आप चाहते हो कि वो हो जाए जो चीज नहीं हो रही है, then it is called as desperately. Okay, so next one is supposed. Suppose means when you think about something, when you assume something. Okay, I suppose that class is not going to happen tomorrow. मैंने ऐसा assume किया, मैंने ऐसा सोचा. I thought that क्लास कल नहीं होगी. So I assumed, I supposed, I thought. Okay, कुछ आपने सोचा, कुछ आपने assume किया, आपने कल्पना की कि ऐसा हो सकता है. Next one is trouble. Trouble means मुसीबत. So for example, when I don't complete my homework, I get into trouble. Okay, so जब भी मैं अपना homework नहीं complete करती हूँ, मैं मुसीबत में हो जाती हूँ. Okay, so trouble means what? When you have, when you are suffering from a problem, when you are suffering from किसी भी मुसीबत से, that is called as trouble. Next one is disobey. Disobey, to obey means what? To follow, to go some against someone is disobey. Obey means किसी चीज को follow करना, to follow someone, and disobey means to not to follow someone. Okay, when you go against someone, that is called as disobeying. For example, I disobeyed my parents, what my parents said. जो मेरे parents ने कहा मैंने उसे disobey किया, मैंने उसको नहीं माना, मैंने उसको follow नहीं किया. That is called as disobeying. Next one is pain. Pain means what? Pain is दर्द. आपको किसी भी चीज का दर्द हो, when you are suffering from something, that is called as pain. For example, I was in extreme pain when my father hit me. जब मेरे father ने मुझे मारा, मैं बहुत ज्यादा pain में थी. So pain means what? When you are suffering from something. आप बहुत ज्यादा दर्द में होते हो, that is called as pain. Okay, so next one is instructions. Instruction means what? किसी भी चीज का आपको, when someone gives you a direction for something, when someone tells you this is how you do something,
So that is called as instruction. The direction for doing something is called as instruction. किसी भी चीज के निर्देश, किसी भी चीज को कैसे करना है, कोई आपको बताए, that is called as direction. Okay, so instruction, okay, yeah, instruction and direction both are same thing. For example, my teacher instructed me to how to write an essay. तो मेरी टीचर ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया कि ऐसे कैसे लिखना है. So okay, so instruction means किसी को डायरेक्शन देना, किसी को बताना कि कैसे कोई चीज करनी है. नेक्स्ट वन इज डिजीज. डिजीज मीन्स एनी इलनेस, कोई भी बीमारी, कोई भी आपको पीड़ा हो, पेन हो, बीमारी हो, दैट इज कॉल्ड एज डिजीज और एनी इलनेस. सो when you are suffering from an illness, that is called as disease. So I was suffering from a disease called asthma. Okay, so for example, मैं अस्थमा नाम की एक डिजीज से सफर कर रही थी, मुझे एक अस्थमा नाम का डिजीज हुआ था. Okay, so next one is it's Hephaestus. Okay, so Hephaestus is a god. जैसे हम बोलते हैं भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण. So Hephaestus is a Greek god. Okay, he is a Greek god and he is called as the god of fire. Okay, जो अग्नि देवता है उसको ग्रीक में जो अग्नि देवता है ग्रीस के अंदर उसे कहते हैं, उन्हें उनका नाम है हेफेस्टस. ओके, सो हेफेस्टस इज नॉट अ वर्ड, इट इज द नेम ऑफ द गॉड, इट इज द नेम ऑफ द गॉड ऑफ फायर. Okay, so all these Hephaestus and Aphrodite, these are the names of the gods of the Greek gods. जैसे हमारी जो संस्कृति है, इंडियन संस्कृति है, इसके अंदर गॉड्स का नाम है विष्णु, महेश, शिव जी, ऐसा. वैसे ही ग्रीक जो संस्कृति है, ग्रीक कल्चर के अंदर these are the names of the various gods. Zeus भी एक भगवान है वहाँ. Hephaestus is also a god there. Hephaestus is the god of fire. Similarly, Aphrodite is the goddess of love and beauty. Okay, so Aphrodite is the goddess of, वो एक देवी है, इनका नाम है एफ्रोडाइट. और वो किसकी देवी है? शी इज द गॉडेस ऑफ लव, शी इज गॉडेस ऑफ ब्यूटी. Next one is charming. Charming means very attractive. Okay, when someone is very attractive, कोई बहुत आकर्षक होता है, that is called as charming. For example, you have very charming personality. आपकी personality बहुत charming है. Okay, so that is called as charming, very attractive. Next one is happen. Okay, happen means कोई भी चीज होना, that is called as happening. ठीक है, कोई भी चीज घटित हो, कोई भी चीज हो, उसे कहते हैं happen. So for example, when I ask you, what happened to you? That means आपके साथ क्या हुआ? Okay, happen means होना. So what happened to you? आपके साथ क्या हुआ? That is called as happening. To when a situation happens, कोई चीज होती है, that is called as happening. Okay. So next one is powerful. Powerful means the one who has power, one who is very strong, one who is very ग्रेट. ओके, सो जिसके पास पावर हो उसे कहते हैं पावरफुल. जो बहुत शक्तिशाली हो, बहुत ज्यादा जिसके पास पावर हो, इज कॉल्ड एज पावरफुल. फॉर एग्जाम्पल, द लीडर्स ऑफ द कंट्री आर वेरी पावरफुल. ओके, सो जो हमारे कंट्री के जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, वो बहुत पावरफुल हैं, बहुत शक्तिशाली हैं. शक्तिशाली का मतलब इट कैन बी इन टू वेज. शक्तिशाली मतलब एक तो फिजिकली आपके पास बहुत पावर हो, मतलब आप बहुत हृष्ट पुष्ट हो, वैसे पावरफुल. एंड अदरवाइज द अदर थिंग इज बहुत पावर होना मतलब आपके पास बहुत तरीके हैं काम करवाने के, दैट इज कॉल्ड एज पावरफुल. Next one is beautifully. So beautiful, you all know, in a very pleasant way, in a very attractive way. And beautiful is someone who is attractive, someone who is pleasant. So and beautifully is attractive तरीके से जो हो. Okay. So for example, you wrote the essay very beautifully. आपने जो essay था उसको बहुत सुंदर तरीके से लिखा. So beautifully means सुंदर तरीके से कोई काम. Beautiful means सुंदर and beautifully means सुंदर तरीके से. Next one is carved. Okay, carved means what? जैसे कोई वुड है, वुड के ऊपर आपने खोद खोद के कोई डिजाइन बनाई है, पत्थर है उसके ऊपर अपने कोई खोद खोद के डिजाइन बनाई है, दैट इज कॉल्ड एज कार्विंग. ओके, खुदी हुई कोई डिजाइन होती है, दैट इज कॉल्ड एज कार्विंग. ओके, to sculpt something, to sculpt a stone or to sculpt a wood or to sculpt any surface, किसी भी चीज को खोदना, that is called as carving. Next one is wonder. Wonder means सोचना. Okay, आश्चर्य होना कि क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ. So when you have surprised, you are wondering something. When you are wondering about something, that means you are thinking about something. Okay, so when you have amazed, when you are amazed with something, for example, I was wondering how it rained yesterday.
मैं यही सोच रही थी कि कल बारिश कैसे हो गई. Okay, so when you have a surprise, so that is called as wonder. Next one is contain. Contains means was किसी भी चीज के it's contains doesn't mean शक्ति. Okay, so this is wrong. Okay, so the contain means किसी भी चीज को रखना. For example, this juice contains apple and mango. So इस जूस के अंदर एप्पल और मैंगो है. तो किसी भी चीज के अंदर होना, that is called as containing. Contain doesn't mean शक्ति. Okay, contain means किसी भी चीज के अंदर होना. For example, this box contains so many toys. इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे टॉयज हैं. Okay, contains मतलब इस बॉक्स के अंदर contain होना, इस बॉक्स के अंदर होना. Next one is strong. Strong again means it's powerful. So powerful means strong and strong means powerful. The one who is very powerful, the one who has power, जो बलवान हो, जो शक्तिशाली हो, is called as strong. Next one is enter. So it's very easy, right? To enter somewhere means किसी भी चीज के अंदर जाना. And entered is the second form of the verb enter. So enter means किसी भी चीज के अंदर जाना. That is called as entering. So for example, I entered the classroom. मैं classroom में गई. So that is called as entering. Next one is leave. कोई भी चीज को छोड़ के चले जाना. That is called as to leave something. Okay. When you go away from something, that is called as leave. For example, I left the classroom at 8 p.m. Okay, so मैं क्लासरूम से 8 बजे निकली. 8 बजे मैंने क्लासरूम को लीव किया, क्लासरूम से निकली, वहां से छोड़ के गई. नेक्स्ट वन इज शेल्फ. ओके, सो शेल्फ इज व्हाट? शेल्फ मतलब जो ताक होती है, अलमारी होती है, दैट इज कॉल्ड एज शेल्फ. Shelf does not mean it's rock. Okay, so these are some very wrong meanings which are given in here. Just cut it down. Shelf का मतलब होता है जो ताक होती है, अलमारी होती है, जिसके अंदर आप सामान रखते हो, that is called as shelf. Okay, for example, my books are kept into the shelf. मेरी books जो हैं, किताबें जो हैं, वो shelf के अंदर पड़ी है. Okay, next one is picked. To pick something means कोई भी चीज उठाना, कोई भी चीज पकड़ना, that is called as picking. Okay, okay, and picked is the second form of pick. Okay, कोई भी चीज उठाना, that is called as pick. Okay, for example, I picked this t-shirt from Adidas. Okay, so मैंने ये t-shirt Adidas से उठाया, Adidas से खरीदा. So that is called as picking. Next one is quick. Quick means बहुत फटाफट, बहुत fastly, in a fast manner. That is called as quickly. बहुत फटाफट, तुरंत कुछ कोई करता है, that is called as quick. So for example, I completed my homework quickly. मैंने बहुत फटाफट से अपना homework complete कर लिया. Okay. Next one is swiftly. So swiftly means in a very slow way. Okay. So quick means in a very fast way, and swiftly means in very slowly, in a very slow manner. Okay. Swiftly means एकदम से swift, very swift you are means एकदम smoothly आपने कोई काम कर दिया. Okay. So swift, for example, I completed my homework swiftly. मैंने एकदम smoothly, फटाफट तरीके से अपना homework complete कर लिया. Okay. So quick is fast. Okay. And swift means एकदम smooth तरीके से, बीच में कोई problem नहीं आई, कोई रुकावट नहीं आई. So for example, I moved at the road very swiftly. मैं रोड पे एकदम swiftly चली गई, बिना किसी problem के, बिना किसी रुकावट के. Next one is driving. Okay, so driving, you know all. To drive a car, कोई भी कार चलाना. Okay, so driving means to drive. Okay, driving. And for example, I was driving a car. I was driving a red car. मैं एक red car चला रही थी. Okay, so drive means चलाना. Next one is jewels. इसको हम pronounce कैसे करते हैं? Jewels. Okay, so jewels means very precious stones, जो बहुत कीमती गहने होते हैं, कीमती जो नगीने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं जूल्स. ओके, और इनसे जो बनते हैं उन्हें कहते हैं ज्वेलरी. ओके, जो जूल्स मतलब बहुत कीमती स्टोन्स, हीरा मोती, इनसे इन सबको कलेक्टिवली क्या कहते हैं? जूल्स. ओके. नेक्स्ट वन इज प्लान्ड. टू प्लान समथिंग मीन्स व्हाट? कोई भी चीज को ऑर्गेनाइज करना, कोई भी चीज को की योजना बनाना. So to I planned a surprise birthday party for him. मैंने उसके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की. Okay. Next one is punished. Okay. So to punish someone means किसी को दंडित करना, किसी को सजा देना. Okay. So to punish someone means किसी को सजा देना. And punished is the second form of punished. Okay. Punished, ed is the second form of punish, punished. Okay.
So to penalize someone और किसी को सजा देना, that is called as punished. Okay. So the teacher punished the students for not completing their homework. The teacher ने students को homework नहीं complete करने के लिए सजा दी. Next one is mysterious. Okay. So mysterious is means what? Having a mystery. जिसमें कोई कुछ रहस्य हो, कोई mystery हो. Mystery का मतलब रहस्य, and mysterious means जिसमें कोई रहस्य हो, जिसमें कोई आपको पता ना हो कि क्या चीज कैसी है. Okay. So for example, there was mysterious caves near my home. Okay, मेरे घर के पास एक mysterious caves हैं. Mysterious गुफा है, बहुत रहस्यमय गुफा है. रहस्यमय मत होना मतलब क्या कि कोई जैसे कोई शायद जिसके बारे में इंसानों को properly पता ना हो, that is called as mysterious. Okay. So next one is again. Again means वापस, कोई भी चीज फिर से होना. So that is called as again. वापस. Okay. So for example, I am teaching you this chapter again. मैं फिर से आपको ये chapter पढ़ा रही हूँ. Okay. Again means वापस कोई चीज होना, फिर से होना. Next one is angry. Angry means गुस्से से. When you are angry with someone, when you are very you're not happy with someone, that is called as angry. किसी भी चीज से गुस्सा होना, क्रोधित होना, that is called as angry. So that is, for example, the teacher was angry on the students for not completing their homework. Teacher बच्चों पे गुस्सा हुई for not completing their homework. Homework नहीं करने के लिए. Next one is satin. Okay. Satin मतलब जो silky soft कपड़ा होता है उसे हम satin कहते हैं. Okay. The cloth which is very smooth or very silky smooth, that is called as satin. Okay. तो satin का मतलब बहुत जो कोई चीज स्मूथ हो, सॉफ्ट हो, that is called as satin. For example, her hair are satin soft. Okay, उसके बाल जो है वो satin जैसे सॉफ्ट है, सिल्क जैसे सॉफ्ट है, स्मूथ है. नेक्स्ट वन इज creatures. Creatures means कोई भी प्राणी, कोई भी जीव, उसे हम creatures कहते हैं. For example, all the animals are creatures. सारे जो जानवर हैं वो प्राणी हैं, वो सब प्राणी हैं. All the animals and human beings are creatures. सारे जो जानवर हैं, human beings हैं, वो प्राणी हैं, वो जीव हैं. Next one is stung. Okay. तो stung means what? कोई डंक मारना. When someone bites you. For example, the bee stung me on my neck. तो bee ने, जो मधुमक्खी ने मुझे neck पे डंक मार दिया. Okay. तो stung means to bite someone. Okay. Next one is death. Death means what? मृत्यु. कोई भी मौत होना, किसी की death हो जाना. When someone is not alive anymore, that is called as death. Okay. So for example, I had to go to a death ceremony. मुझे एक death ceremony में जाना पड़ा. Death ceremony means what? किसी की जब death हो जाती है तो उसके लिए जब आप एक फंक्शन, थोड़ा जो छोटा सा फंक्शन होता है वो ऑर्गेनाइज करते हो, that is called as death ceremony. Okay. Next one is winged. Okay. So wing मतलब पंख, and winged मतलब किसी भी चीज जिसमें पंख हो, ऐसी चीज जिसमें पंख हो. Okay. So for example, uh, I was traveling on a winged aeroplane. Okay. एक एरोप्लेन जिसमें पंख थे. I was traveling on that. Next one is transparent. Transparent means what? एकदम पारदर्शी कोई चीज होती है जिससे आप आर पार देख सके. That is called as transparent. जैसे कि ग्लास है, ग्लास से आप आर पार देख सकते हैं ना. That is called as a transparent surface. So for example, glass is a transparent surface. जो ग्लास होता है, शीशा जो होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है, उससे आर पार देख सकते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपेरेंट surface. नेक्स्ट वन इज मल्टी कलर्ड. ओके. सो कलर्ड मीन्स व्हाट? कलरफुल होना. एंड मल्टी मीन्स व्हाट? बहुत सारे कलर्स होना. तो मल्टी कलर्ड मीन्स बहुत सारे कलर वाला जो कुछ होता है, दैट इज कॉल्ड एज मल्टी कलर्ड. समथिंग इज हैविंग सो मेनी कलर्स, दैट इज कॉल्ड एज मल्टी कलर्ड. For example, multicolored dresses, multicolored spoons. Okay, so multicolored means बहुत सारे कलर का कोई चीज होती है, that is called as multicolored. Next one is bite. Bite means what? किसी भी चीज को काटना, that is called as bite. Okay, for example, the snake bites the cat. Okay, snake ने बिल्ली को काट लिया, उसने उसको bite कर लिया. Okay. So, okay, children, that's all for the vocabulary of chapter number 8. And in the next class, we will start with the chapter. We will start with the lesson explanation. Okay, so that's all for today's lecture, and we will meet in the next class. Until then,
Bye bye, and I will see you in the next one.